Am I audible? Am I audible to all of you? Hari Om. A Brahmana guest is considered in our Hindu Shastras as a double-edged weapon. We can avail of it either to cut open our paths, clean out the jungle of life, or to destroy ourselves by ignoring him or by disobeying his right advices. The Lord Death was not at home, and the disciple had to wait 3 days and live to a self-imposed discipline of fasting. Here again, it is meaningless to wonder if that a thing was ever possible. When the consorts of death were there at home, actually the story wants us to understand only that a certain amount of self-discipline and self-control are to be practiced by every seeker. He can come to bliss by the contact of a perfect Guru. The comparison of a guest with fire is very appropriate inasmuch as in the Vaidika period, the worship of fire was the most common method for gaining merits for the hereafter. At the same time, fire can burn down the houses and bring sorrow and disaster to the householder. Also, Vaishvanara means belongs to all men. This term has been used as many as 60 times in Rig Veda to indicate fire in all its aspects. One thing is to be noted here. In modern societies also, a cultured and educated guest is always respected and revered. The word Brahmana in his connection means not the one who has come to claim it as an accidental privilege of birth, but as I said, it means one who has the necessary cultural purity and mental and intellectual powers manifested in him as an individual. That's the key point. In our culture,
Really, it was never told that the son of a Brahmin will be considered as Brahmin. Now there is shortage of that Brahmin. That is why we are, you know, do whatever we need. Like after some ritual, feeding the Brahmins are required. Isn't it so? So on that time, we find who is having the title of Brahmin. Maybe he works in a shoe shop, but we request please come at least in the evening because I have to feed 5 Brahmanas or 9 Brahmanas or 7 Brahmanas. Such thing happens nowadays. But at Vaidika period, leave about Vaidika period, even a few decades back also, there was a lot of values for Brahmana who was really used to perform his swadharma. Brahmanas also was very restricted and disciplined. Bhagavan in Bhagavad Gita tells Chaturvarna Maya Srishtam. Bhagavan has created that distinction. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. And when Bhagavan is so compassionate for us, each and every time he keeps ready everything for us. We distinguish seasonal fruit, food for everyone. He has assured food for everyone. But we distinguish. We give some food's value so much that it's not affordable to all. So that's the point that Bhagavan has created Chaturvarna. He never told that Brahmin's son will be Brahmin. It's based on the guna and karma. Suppose in Indian army, have you ever seen that father is in army? It means the whole lineage will be continued. It never happens. Everyone has to go through several processes to prove himself that yes, I can work as Kshatriya. I can protect my country like that. The same thing is for the Brahmana also. It was there. So, Nachiketa was such a person who was totally engrossed with the Vaidika Anusasana. Whatever what Veda says, whatever his Guru says, it is for him a big thing. He was established in Vedika verdicts.
And if those people are insulted, uncared, according to Veda, it is punishable offense. Punishable offense means when Veda is telling it is punishable offense, means Paramatma will punish him. We have no right. So that's why, they see he was not a Brahmina. Even he was an atheist. He transformed himself in much adult age. And he understood the realm of that fact. And he praised Brahmana in his commentary. But that Brahmana who really remained engaged all the time in studies and teaching and puja, part, etc., and who is truthful, who is having compassion for all, love for all, and he never envious to anyone else. That is Brahmana Lakshana, love for all. Even in Purana also, we have seen that Kshatriya, by doing penance, getting Brahmanahood. So that Brahmanahood should be earned, attained. It's not that parental property. Here that Brahmana has been mentioned. Clear? Now, आशा प्रतीक्षे संगतं सोनुतां च सुनृतां च संगतं सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतत् वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसः एतत् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्याननश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद्वृन्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्नन् अनस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे. In that case, what happened now? Brinte. Either brinte means which destroys everything else. So asha, hope, pratiksha is expectations. Sangatam means punya, merit gained in company with good men. सत्संग करते करते
जो पुण्य अर्जन होता है उसे ही संगतम बोलते हैं। देन tunritam, friendly discourses, cha and ishtapurte, secret sacrifices, charitable deeds, and pious gifts. Putra son, Pashun's cattle, and Sarvam all. Either this bring they are destroyed. Purushasya of the man, Alpamedhasaha, Alpabuddhi. Here Gurudev is telling ignorant. Yasya to whose anasnan without taking food, vasati stays, brahmana is brahmana, grihe in the house, hopes and expectations, fruits of company with good men, merits of sweet and friendly discourses, beneficial results of sacred sacrifices, charitable deeds, and pious gifts, son and cattle, all these are destroyed in the case of an ignorant man in whose house a Brahmana guest stays without taking food. When considered 2025, here Brahmana doesn't mean that Banerjee, Chatterjee, Mishra, Mukherjee. Here Brahmana means good people. If good people are not taken care properly, if good people are not fed properly, respected properly at your home, it means here destroying everything. It's a Vedic Siddha. But generally, we find the person who knows how to respect, कैसे लोगों को सम्मान कर सकते हैं, ये इनका मन में होता है, क्या आता है परिवार में, उस परिवार में एक कल्चर है वो, and those families are taken care by Bhagavan itself. गृहस्थ का धर्म है सेवा, अतिथि सत्कार। गृहस्थ का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गार्हस्थ, मतलब ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ये तीन आश्रम का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक आश्रम के ऊपर है, वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम इतना रिस्पॉन्सिबल आश्रम है। इन मेनी स्क्रिप्चर्स गृहस्थ आश्रम को संन्यास आश्रम से भी ज्यादा मर्यादा दिया है, क्योंकि ये तीन आश्रम को रक्षण, परिपालन कर रहे हैं। एक ही आश्रम वो है गृहस्थ आश्रम, और उसके साथ साथ गृहस्थ को खुद को भी चलाना पड़ता है। That गृहस्थ, if
he ever does anything wrong in seva, that is an offense. गृहस्थ सन्यासी जैसे नहीं हो और सन्यासी गृहस्थ जैसे नहीं हो। जो आश्रम आपने चुना है, ब्रह्मचारी आश्रम के बाद जो भी आश्रम या सन्यास आश्रम या गृहस्थ आश्रम, ये आपका चुना हुआ पद। इफ यू डोंट मेंटेन दैट path, it is punishable offense by Bhagavan. You can see how many sannyasis are suffering also because they have not performed their sannyasa role, sannyasa duty. Likewise, grihasthis also. Grihasthis will do sadhu seva, brahmachari seva, vanaprasthi seva, 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 seva. According to the Veda, it is the verdict for grihasthis. तो जिनके घर में अतिथि ब्राह्मण उपवासी रहते हैं, मतलब लोग है घर में कुछ नहीं है, मतलब भाई मुझे तो पता नहीं था कि तुम आओगे, रुको कुछ लाना पड़ेगा और मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जो ला देगा, क्योंकि मेरे घर में तो खाने वाले सिर्फ मैं हूं और एक बंदा है, इसलिए मैं कुछ नहीं रखता। डोंट टेक एनीवन एल्स पर्सनल प्लीज, बिकॉज आई ट्रेवल अराउंड, यू आर नॉट वन, इट happens many places, बट गृहस्थ के घर में हर वक्त सेवा की सामग्री रहेगा। At least one person's extra. If anyone doesn't come, give it to others. A lot of people are there still now in India. आप सोचिए शबरी की कहानी। Shabari never waited that when Bhagavan Ramchandra will come and I will bring food. A few decades he brought and gave the best food for Bhagavan. 80-90 साल की तपस्या के बाद एक दिन भगवान आए। हमारा शास्त्र ही दिखाते, it's not that food wastage or anything else. You have to keep something else at your home. Not for you. Maybe you don't like to eat. You don't like, that means you won't feed others who likes. ये गृहस्थ की फर्ज बनता है। And atithi, anyone can come who is not invited by you. Even जिनको आप कभी जानते भी नहीं और जानते हैं बहुत दिन मिला नहीं, सडनली आ गया। आजकल की मोबाइल के जमाना में भी ऐसे हो सकता है। गेट रेडी, थोड़ा सा कुछ, ऐसे नहीं 56 भोग। At least something else should be there at your home.
और अतिथि सत्कार, ये वैदिक सिद्धांत है। क्योंकि आशीर्वाद ऐसे नहीं होता कि मैं आशीर्वाद कर रहा हूं आपके जीवन में ये होगा। ऐसे आशीर्वाद की काम बहुत कम है, होता ही नहीं। लेकिन जब आपके सेवा में दूसरे का खुशी होता है, आनंद होता है, उस खुशी, उनका खुशी आपके जीवन में आशीर्वाद की तरफ लाइफ वापस आता है। दैट इज पुण्य। You got my point. When due to your seva आपकी अतिथि खुश है, आई एम सो हैप्पी, इट वॉज सो डिलीशियस। दूसरे की खुशी आपके जीवन में आशीर्वाद के रूप में वापस आते हैं। और ये आशीर्वाद रूपी पुण्य इतना लाभदायी है, आपको पता भी नहीं चले। जैसे आप आज की जमाना में तो सब लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन पिछले जमाने में वाइफ वॉज द होम मैनेजर, होम मेकर। वो संसार से बचा कुचा के पैसा कहाँ कहाँ रख देता, चावल की डब्बा में, बिस्किट की डब्बा में, जहां पर सिर्फ उनका ही एक्सेस था और दूसरे का नहीं। और वो पैसा एक ऐसे अंतिम चरम समय में काम आता था कि जो हस्बैंड बोलते थे अरे मेरा जेब से पैसा कहाँ जा रहा है, ये इतना शिकायत था, वो पूरा जिंदगी के लिए ऑब्लाइज बन जाते थे कि अगर तुम ऐसे करके पैसा नहीं रखते तो आज ये प्रॉब्लम होता हमारे लिए। Those sort of punya, like अतिथि सेवा and small small पुण्य, जब आप किसी को कुछ दिया और उनके मन में खुशी हुआ, ऐसे पुण्य आपके जीवन में कहाँ मिराकल ला देगा, यू हैव नो आइडिया। सो जिनके घर में ब्राह्मण उपवासी रहते हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति कभी उनका चाहत की वस्तु नहीं पाते। कभी कभी आप देखेंगे समथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग बट यू आर नॉट गेटिंग, और किसी को ना चाहते हुए भी मिल जा रहा है। यू शुड नो, यू शुड नो, यू शुड नो योर कर्म फला, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर वर्किंग। We are overwhelmed by our own action because we are the best advocate for our lives. Each and every action, reaction, we want to justify that I am a very good person. I have done this. To market my all events of life, I forgot to see the flaws and the faults of my life. लोग बहुत प्रेज किया, प्रशंसा किया, एवरीथिंग दे हैव डन। इसलिए मैं हमारे जीवन में जो फ्लॉज था वो देखना भूल गया। हमारे जीवन में ऐसा होता,
और ऐसे डिमेरिट्स हमें ही भुगतना पड़ता है। इन आवर लाइफ वी आर हैविंग वेरी गुड वासनास ऑल्सो, लेकिन वासना मिट नहीं रहा है। क्यों मिट नहीं रहा है हमें पता भी नहीं चलता। आप पूछो, खुद को ही पूछो। मेरिट डिमेरिट्स, शास्त्र बोल रहा है कि उनको जो एकांत मिलना उचित था उससे भी वो वंचित होता है। सारे इधर सन्यासी लोग बोल रहे हैं, जिनका भाष्य से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। और भाग्य की परिभाषा में और बहुत कोशिश करके कुछ अच्छा मिला, लेकिन वो भी अनसर्टन हो जाता है। सुख ज्यादा दिन के लिए टिकता नहीं। इसीलिए शास्त्र बोल रहा है, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर दृष्टि। आनंद गिरी जी आज से 600 साल पहले बोल रहे कि जैसे पाप कौन सी है, हम लोग दूसरे का दोष तुरंत देख के उनका ही चर्चा करने लगता है, सिर्फ मन में नहीं, दूसरे को भी कन्विंस करना चाहते हैं कि दूसरा मतलब दूसरा व्यक्ति कितना खराब है, क्या क्या फॉल्ट्स है। वही हमारा चर्चा की विषय है और वही डिमेरिट्स है, पाप है। द डिसाइपल ऑफ शंकराचार्य जी, आप सोचिए, इस समय की बात नहीं, वो बोल रहे हैं अगर यू हैव द क्वालिटी टू सी द गुड इन एवरीवन, लोगों के अंदर अच्छा क्या है। नहीं तो देखिए, इतना 1000 साल पहले सन्यासी लोग रहे, ये आप बहुत शुभ कर्म करते, आप दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं, यज्ञ करते हैं, कूप खनन करते हैं, पुष्करिणी करते हैं, धर्मशाला निर्माण किया है, स्कूल निर्माण किया है, बहुत कुछ किया। लेकिन ये छोटा छोटा दोष जिसे हम लोग सोचते हैं इट्स वेरी नेग्लिजिबल, कभी कभी हम लोग बोलते हैं अरे ये तो उसका अंदर है, मैं बोले तो क्या हुआ। यू हैव नो राइट, दैट सन्यासीज आर टेकिंग, because each and everything is the mixture of sattva tama rajas। आप कोई नया चीज ढूंढ नहीं रहे, आपके अंदर भी बहुत दोष है। पुण्य का सबसे बड़ा चीज है ना, लोगों के साथ थोड़ा अच्छा तरीके से बात करो, प्रेम से, और उनका जो अच्छा चीज है उनका अप्रिशिएट करो, बुरा मत देखो। देखिए गांधी जी का बांदर, ये क्योंकि ही वॉज द फॉलोअर ऑफ वेद, वो भी एक ऐसे ही है। बुरा मत देखो मतलब अच्छा चीज देखने का कोशिश करो। इनसे पाप होता है और उस पाप का फल भयानक है। भयानक मतलब अगर आपका राइट्स आपको नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है विदाउट एनी रीजन वो चले जा रहा है हमारे पास से, तो जीवन बिकम्स हॉरिबल। एंड हम लोगों को पता भी नहीं चलते कि भाई मेरे साथ ही क्यों ऐसे हो रहा है। This is the reason Shastra is showing. And here, see, one sannyasi is writing that सिर्फ पत्नी की बात सुने थे यमराज जी, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण को सत्कार किया ऐसे तरीके से। मतलब सी बीइंग ए सन्यासी ऑल्सो,
how he appreciated Yamaraj's wife and Yamaraj's decision that मे भी हो सकता है कि यमराज की स्त्री ने बताया, अरे तुम्हारा कोई अकल नहीं, ये तो शायद मुझे लगता है राष्ट्रपति की वाइफ भी बोलते हैं कि तुम्हारा बुद्धि नहीं है थोड़ा सा भी, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहता तो तुम्हारा क्या हालत होता है, ये तो मैं सोचता हूँ। जाओ 3 दिन बैठे हुए हैं और तुम दोस्त के घर गया और भूल ही गया, एंड जितना भी स्ट्रीट लोग है ये है, I I have heard read the interview of TN session, जिनके ये डर से प्रधानमंत्री तक कांपते थे, तो उनको बताया कि भाई आपके डर से ऐसे सब लोग कांपते, आप किसको डरते? ओनली एक ही व्यक्ति से डरता हूँ, एंड दैट इज माई बेटर हाफ। तो देखिए, इट्स एन अपार्ट फ्रॉम द जोक्स, so that is the better half, to give a moral support, what has to be done and what has not to be done. And this is the impact of this mantra. Hari Om. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamidam. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Gurubhyo Namah. Hari Om. Today is Rath Yatra, so I wish you a very happy, holy, joyous Rath Yatra to all of you. Bhagwan Jagannath is Darshanamur. Darshana Matrena Kamanapur. इनको पूजा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दर्शन करने से ही मन की सारी मनोकामना पूर्ण होता है, जिस भगवान को वही है जगन्नाथ। और आप उनको जिस भाव में देखना चाहते हैं उसी भाव में देख सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ देव इज फिल इन द ब्लैंक। जगन्नाथ देव कोई असंपूर्ण भगवान नहीं कि आंख ऐसा है, हाथ ऐसा है, पैर नहीं है। जगन्नाथ इज द फॉर्म ऑफ द भगवान, इज लाइक फिल इन द गैप। आप उनको शिव रूप में देख सकते, गणपति रूप में देख सकते, आपकी गुरु के रूप में देख सकते, आपके बेटे के रूप में देख सकते, आपके दोस्त के रूप में देख सकते। ऐसी भगवान को दर्शन करने से ही मनोकामना पूर्ण होता है। ऐसी जगन्नाथ देव की रथ यात्रा, और रथ यात्रा की वैशिष्ट और है, रथ यात्रा सिर्फ जगन्नाथ देव की नहीं, बहुत सारे देव देवता का ही रथ यात्रा, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। बाकी देवी देवता का जो रथ यात्रा होता है, पूजा किया हुआ मूर्ति को कभी रथ में नहीं लाते, उनका उत्सव मूर्ति अलग रहता है। व्यतिक्रम इस जगन्नाथ देव, उनका पूजा विग्रह, उत्सव विग्रह एक है। दैट्स द ब्यूटी, जहां पर भगवान अपने चेयर छोड़ के लोगों को दर्शन देने के लिए आते हैं। आज उसी रथ यात्रा है। आई विल गो टू सॉल्ट लेक दिस आफ्टरनून। I will reach by 3 o'clock. If anyone stays nearby, can come to inaugurate on Rath Yatra. That is also a huge Rath Yatra.
more than 5 to 10,000 people participate in that Rath Yatra, more than that. So you can, okay, Hari Om, Hari Om. Oh, Hari Om to Vijayamma, Hari Om to Devamma, Hari Om to Shamma, Hari Om to Vaikayamma, Hari Om to Shiva, Hari Om to Ram Nansi, Hari Om to Ghosh Babu, Hari Om to Vijaya Amma, Hari Om to Alkaji, Hari Om to Chaitaji, Hari Om to Anantama, Hari Om to Jetli, Hari Om to Krishna Paja. Today is Friday, so Bhagavad Gita class is there. जिनका जिनका उपाय है, please try to join. Hari Om class at 11 o'clock. At 11. And our Salil Babu and Tuklama has brought Haja to offer Bhagwan, and that will be the prasad, in our physical class also, because it is physical and digital both. Hari Om.